the equation of, let me ask you the question. What is the equation of instantaneous current in the case of alternating currents? AC के केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन क्या होती है? What is a graph? Okay, let me ask you, what is a graph? Let's do a discussion. डायरेक्ट करंट वर्सेस एसी में ग्राफ क्या होता है एसी का? उसको क्या बोलते हैं एसी वाले ग्राफ को? एसी के ग्राफ। अच्छा। हाँ, जो हम ग्राफ हाँ, बना रहे थे। साइन वेव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जो इक्वेशन है, इट्स अ साइन वेव। हाँ। तो साइन वेव से रिप्रेजेंट करना है साइन की इक्वेशन से। वो साइन की इक्वेशन क्या थी जो मैंने बताई थी? इंस्टेंटेनियस किसी भी टी टाइम पे निकालने के लिए वोल्टेज या टाइम को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की क्या इक्वेशन थी? साइन साइन इक्वेशन। आई टी और वी टी एट एनी टाइम इंस्टेंट कैन बी रिटन एज, if you look at this question, the question is push, tell me the value at this time. This is 100% sure that he is referring to in some instant on this graph. So there is a graph of I, and you have to find at some instant, right? What was that equation? Let's talk about the concept which we have to use. वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू साइन से डिफाइंड है, उसकी इक्वेशन साइन की है। क्या एक ग्राफ था वो, क्या इक्वेशन थी वो? इक्वेशन थी। ओके, लेट मी हेल्प यू। उसके अंदर पीक आता था, आई पीक। उसके अंदर साइकिल पर सेकंड आता था, ओमेगा आता था। उसके अंदर साइन भी लिखा हुआ आता था, और वो बताता था कि किस टाइम पे करंट कितना है, किस इंस्टेंट पे। साइन साइन की इक्वेशन थी, उसमें पीक भी आता था, उसके अंदर ओमेगा भी आता था। इफ यू कांट रिकॉल आई टू साइन एट, ओमेगा टी प्लस हाँ थीटा। एग्जैक्टली exactly, यही तो थी। व्हाट वाज दिस कॉल्ड एज? आई नॉट। पीक, हाँ, पीक कहते थे, द ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू, राइट? नाउ रीड द क्वेश्चन। ओके, इफेक्टिव का क्या मतलब होता था? नेट। मतलब यूजफुल। यस और सर। अगर मैं बात करूं इफेक्टिव का, तो हमने तीन तरह की एवरेजेस पढ़ी थी। वन एवरेज वी स्टडीड वाज ओवर अ फुल साइकिल, which we remember positive and negative gives you 0. But if you study the average across a half a cycle, it gave you 63.7% of I naught. आई नॉट। And if I tell you what was the average over a full cycle, but the heating effect equivalent or the useful, that was called as RMS. This I told you is the most real and effective. हाँ, ये आपने बताया था आरएमएस। Okay, so this value which is given to you is RMS value. And this was 70.7%. ठीक है। Now read the question and tell me, what was this 50 cycle? What was this omega in this equation? The ओमेगा frequency 50। of F. Omega is 2 pi F, angular frequency. But what is the frequency of an AC signal? Frequency of the AC signal was F. एफ है, हाँ। ये दी हुई है वो। यस सर। So now you can find omega. हाँ, You are करें। given RMS. What was the relationship between RMS and peak value? I RMS was equal to I peak, मैक्स लिख लो, आई नॉट लिख लो, आई पीक लिख लो, डिवाइडेड बाय √2। ठीक है। So you are अच्छा, given समझ गया। effective value of 5 amperes, which means your I आरएमएस। RMS is equal to 5 is equal to I peak इससे divided by आई root मैक्स 2। निकल जाएगा, हाँ। तो ये निकल जाएगा। हम्म। You know omega, so you can ओमेगा भी find, निकल जाएगा, निकल हाँ। जाएगा। At what time are you supposed to find it? Time वन dependence बाई is a थ्री हंड्रेड function. हाँ, अब Put हो it here. जाएगा कुछ। तो हमने पाई क्वेश्चन बाय करो। 3 एंड में काट दिया था। शुरू में यू वर डूइंग दैट, आई वाज डूइंग दैट 2 into 3.14 एंड ऑल दैट। तो पाई बाय 3 आ गया था।
और आई सेड कीप ठीक इट, है। रिमेंबर 100 हाँ, पाई समझ गया। मल्टीप्लाई बाय 1/300 गेव यू π/3, बाय 3। फिर साइन ऑफ π/3 था। दोज मैनी एम्पियर्स आर अवेलेबल टू यू एट π/3। तो साइन 90 पे तो पीक है, हम्म। लेकिन 60 डिग्री पे, साइन ऑफ 60 डिग्री पे इतनी वैल्यू है, पीक से कमी आएगी। हाँ, राइट, दिस हेल्प्स यू फाइंड दैट एट डिफरेंट एंगल्स, ये डिफरेंट एंगल्स है, समझ गया। एंगल कह लो, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। ओमेगा हम्म। इज फिक्स फॉर द सिग्नल, सो टी कीप्स ऑन चेंजिंग। किस टाइम पे निकालना है आपको, जैसे ये वाला टाइम आधा टाइम पीरियड है, हाँ। हाफ 10t/2। हम्म। अगर टी दे रखा है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी इज 50, देन टी इज इक्वल टू 1/50, सो टी यस बाई सर। टू इज इक्वल टू 1/100। हम्म। सो कोई बोल सकता है प्लीज फाइंड द value of the current at half the cycle. You don't even have to calculate. You will say at half the cycle, I know sine graph is zero. हम्म। Sine is zero at half the cycle. हाँ। 180 degree pe sine is zero. Why do I need to even calculate? So हम्म। I'm indirectly telling you half the cycle omega t is 180. ठीक है। Theta is 180, right? So there हाँ। are two ways you will look at this graph just to bring more clarity in your mind. Generally, what happens is these graphs of I versus their omega t, हम्म। so which means theta, which means जैसे मैं 90 लिखता रहता हूँ, हाँ। राइट, उसमें आपको ये ओमेगा टी दिया हुआ है, तो यहाँ 9, ये दिस इज π/2, दिस इज से पाई, दिस इज 270, दिस हम्म। इज 2 पाई. Some graphs on the contrary are based on the time, they don't have omega, थीटा ठीक पे है, अब नहीं सारे होते वो। कॉन्सेप्ट्स आ गए, मुझे याद आ याद गया। आया कुछ? हाँ। ये टाइम पे भी हो सकता है, तो ये हम्म। इसको मैं लिख दूंगा π/2 की जगह t/4. ठीक है। I will write this as t/2. Then I will हम्म। substitute the values in the equation of t. Omega is known हम्म। to me. So I can draw both the graphs. I can draw I versus omega t. I can draw I versus t. हम्म। ठीक चॉइस है है। आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही साइन ही है। हम्म। ठीक है? Any ठीक है। doubts in your mind that something नहीं, was अब क्लियर हो गया। not making sense? Okay. Well, it's just you need to go back and say, okay, why this problem is coming? हम्म। It's a small recall, nothing more than that. Okay, so let's discuss a question, okay, again to strengthen your concept. Ki, so the situation is there is an electric current. Let me just copy the question for you. Okay. So a very important question that comes in school papers or board examination or JEE or is on the topic of RMS, हम्म। where I told you you have to square all the values, even if they are negative. And the impression you get is that negative means useless and the average is zero. But actually, it is not useless. It is very useful. हाँ। Okay, so squaring helps you obtain that heating effect concept. The squaring हम्म। will make even the negative currents, even this side positive. So यस सर। you do I square, right? So look at this question. Very important concept to understand that how do the RMS questions come in? Try this. Okay. First of all, you will need to write the basic concept as to how to write RMS is very हम्म। important. ठीक है। RMS का जो integration का concept है, I told you you have to understand each and every derivation. We did derivations also. When you do IRMS or ERMS, one and the same thing. दोनों हम्म। ही साइन से होते हैं, तो therefore they have a root mean square value. You have to be very careful that
The root mean square value is the square of the instantaneous value. So instantaneous value generally is I square I, this square of this, I square RT dt, root of this, dt is anyway outside. Okay, R is also outside. I will just remove them. So it's I square, okay, and divided by the time interval. General formula of calculating. If I is defined like a sinusoidal, in our Hmm. question, I is not defined as sinusoidal. Hmm. But the concept doesn't change. RMS is still square of the current into dt. R will get cancelled on both the sides because either way I will write it as I RMS square R. So R will Huh. anyway get cancelled. Okay. So I RMS is generally given by this formula. So I RMS is equal to square of the instantaneous current dt. So this is the instantaneous equation, which we just studied is sinusoidal generally. But Hmm. all currents are not necessarily alternating currents. They can behave like this also. They can behave in any equation. This is not an alternating current because it has no sine or cos. Huh. Both sine and cos only are treated to be sinusoidal. Hmm. Sinusoidal means it has to be either cos or sine. If there is no cos and sine, it is not sinusoidal. Fine. But RMS is a mathematical concept which can be applied on any type of equation. Hmm. So I square dt divided by 0 will give you the RMS value. So now try and use the same concept of IRMS in this. The instantaneous equation is this. Try it if you can write it. Just see the value. So I'm writing this as I instantaneous, which you know is this I instantaneous. Hmm. So put it. See if you can try and solve it. Okay. You can see the current is dependent on time, Fine. Oh. right? Current is also dependent on time in a sinusoidal way, but the behavior is this. Hmm. Here the behavior is that of a straight line. Y is equal to, so I is peak fixed. This is some fixed value. And T is so Y is proportional to mx. Maybe the instantaneous current is defined like this. It's not a sinusoidal, it's a straight line. But and the value is changing at every instant. Hmm. So the last value you get is at t or tau, whatever. So you have to find the average root mean square of all these values using your knowledge of IRMS. Use this. ठीक है. IRMS is this I square, which is the instantaneous square, the square of this dt divided by 0 to t. Okay. ठीक है.
So do the square of the given equation. dt. Achha, you've started. Okay, so this is I naught square. It's not out. Look at this. Anyway, so I naught square t square. I naught. पूरा अच्छा square हाँ होगा ठीक ना? है ठीक है हाँ Everything समझ is गया getting squared. Why not? मैं करता हूँ ठीक Got it ना? हाँ भाई मैंने इसको सबको स्क्वायर करा है. हाँ समझ dt गया बाहर रखा है मैंने. dt is not part of the square root. I square is the instantaneous square का under root is fine. हम्म, So a lot of people solve this. Don't. What they do is they start with this. So they don't write. So ये लिख लिया I square. So make it I square. अभी root बाद में लेना. Like ओके I have done root ले लिया ना मैंने तो इधर. Don't take the root. Keep it like this and take a root only after doing the integration. ओके So I am also removing my root. I am also removing my root. So first integrate, then take the root. Small change in the approach. So first integrate the square, IR square t. First integrate this, I square dt. This you know is very simple, right? This is t. So this will ये तो become टी बन गया t ban gaya. And this t square will get collected with this. So this will become a t cube. And this is again t square dt. This will also become t cube by 3. टी क्यूब बाय This is a fixed value, nothing to worry. So start solving. So first you will integrate I square dt. First step. Solve कर लो. This is instantaneous. First integrated आराम से. नीचे तो anyway you're getting a t. हाँ 0 to t. Because it is 0 to t. It is given in the question. And then after you find the value, take the square root because this is square. So what you're calculating right now is a square of RMS. ठीक है? I square t cube 0 to t. नीचे तो t cube आ गया. This is हाँ t square. इसका भी t आ जाएगा. t cube आ तो ये गया टी क्यूब कैपिटल. हो गया ठीक है जी. और ऊपर आपका 0 to t है. ये वाला. हाँ ये 0 to 2 This is a definite integral. Right. ठीक है अब तो ये Excellent. Good. So t cube minus 0. You have to write ये तो t cube by नॉर्मल 3. Please be careful. Your integral is t cube by 3. When you integrate t square, what is the value? टी क्यूब बाय 3 होगा So 3 का है. अच्छा अच्छा हाँ सर सर तो ये आई नॉट स्क्वायर बाय आई नॉट स्क्वायर टी बाय 3 बच जाएगा T cube is there. Down also. नीचे भी है. अच्छा वो So this will get cancelled. ये तो t cube ही बचा. So you're ये left नीचे कट with गया आई नॉट स्क्वायर बाय 3 3. So this is IRMS square. So अब इसका रूट IRMS कर is देना exactly in the next step. Yes, and this is your RMS value for this type of signal. So signal can be this. A signal can be like this. Everything in the world has a RMS value. आरएमएस वैल्यू Sinusoidal ने किसी भी चीज की हो सकती है, but basic is this. ओके Right? So this is one single current that will produce the same heating as will be produced by these currents. जो triangle में current दिख रहे हैं ना ये वाले छोटे, ये सारे अलग हैं. So all the heat which they will produce in the resistor, if you apply just this one current, it is like same. ओके That is the significance of RMS.
Hmm. So I will just I by root 3 is I by 1.732, or maybe I naught by root 3 is root 3 by root 3 is equal to I naught root 3 is equal to I naught into 1.732 by 3 point 0.57, right? Something like 60%. So if Hmm. this is your I peak, highest value you reached, then your 60% of that, if you would have applied a single current, which was 60% of the peak, you would get the same heating effect as you got from so many currents. Hmm. Because RMS is the useful part. It is based on the heating effect. That this alternating current, sorry, not this is not an alternating current. This particular current is capable of producing heating effect. But what is that single current which is equivalent of so many currents? You have found that. So Hmm. this Yes, sir. current, if you apply for the whole time period 0 to t, right now you're applying an increasing current. This is Hmm. current is increasing in your case. I say I will Yes, not sir. allow you to apply an increasing current. Please tell me single current which will produce the same heating effect as this increasing currents. Hmm. So Correct. I will tell you, I am going to calculate RMS, and that's a single current which will produce the same heating as was produced by this increasing current Huh. from 0 to t. So RMS gives you the correct picture of the usefulness of this alternating current in a single Hmm. current equivalent. Instead of giving you thousands of currents at Huh. every microsecond, I am capable of telling you one current which you give. That is a overall average power of the increasing current. Hmm. मतलब मोटा मोटा बताओ जी कितना ये हीटिंग क्या होगा? मैं बोलूंगा इतनी हीटिंग करेंगे ये सारे करंट, क्योंकि बहुत सारे करंट है बढ़ते हुए। हाँ. ये इतनी हीटिंग करेंगे मतलब इतना आई स्क्वायर आर टी पैदा करेंगे। तो आइदर वन वेज यू कैलकुलेट ईच ऑफ दीज करंट्स, put the Hmm. value of t here, get a Yes, sir. value of I, then put another value of t. तो टाउ बोलो आप डालो 1/100t, Hmm. फिर डालो t इज इक्वल टू 1/200t। कितने डालोगे? हाउ मेनी विल यू पुट? हाँ. ठीक है. जो भी बोलोगे मैं बोलूंगा उसका आधा के और डाल दो। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, सो दैट इज व्हाई यू यूज इंटीग्रेशन, बिकॉज इट Hmm. टेक्स केयर ऑफ द, it gets you the whole area under the curve then. But the point ठीक है. is, if you can calculate all these i's, maybe 1,000 i's you get, then you say, Hmm. okay, for each I am going to do I square RT. करो फिर, add it 1,000 times. 1,000 heating effects, 1,000 times you will have to apply this. ठीक And है this सर. is what you're doing using integration. You're calculating that 1,000 things in one go with the help of this expression. Hmm. And then you're saying, okay, one current will come which will produce the same heating effect as was produced by these 1,000. First heating by a very small current, second heating produced by the second very small current, so on and so forth. So these are 1,000 currents. Please add heating effect of each of the 1,000 current, which is madness. Who will do हाँ, this? वो तो नहीं कर सकता. So you are using integration to overcome this problem. Hmm. And then you're saying, what is the single current which will produce the same? So R will get cancelled because all the currents are connected with the same resistor. हाँ. They are being applied for the same time period. Yes, sir. I square R will come out. Hmm. I square R dt plus small time interval I2 square R dt. Say you take equal time intervals when you're calculating the heating effect. So each of this time interval is dt, 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 dt. So you will end up taking 1,000 dt's instead, which means all the dt's will finally add up to t. Hmm. So one single current, which represents the same power of heating as these 1,000 currents added together, and their हाँ. average taken over a time period t. So you can see the average divided by the total time. That single current you have found out produces the same heating effect as these 1,000 currents do in the time period t. ये current
टी टाइम के लिए लगा लो, एक ही सिंगल वैल्यू उतनी हीट देगा जितनी ये सारे करंट दे रहे हैं अकेले अकेले छोटे छोटे। समझ गया। मैं वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब अगर मैनुअली करना पड़ गया बिना इंटीग्रेशन के, तो हाउ विल यू डू दिस? नहीं, वो You पॉसिबल नहीं। so you will calculate 1,000 times, then you will हम्म। divide by t, so you will get 1,000 values to calculate. And dt क्या चुनोगे? 0.001 सेकेंड में भी हाँ। टाइम इंटरवल बोलोगे, आई एम कैलकुलेटिंग इन वेरी, तो ऑल dt's will come out, ऑल r's will come out, r तो कॉमन है सब में, dt भी हम्म। सब में कॉमन होगा। सारे करंट का ये स्क्वायर जो छोटे छोटे करंट ले रखे होंगे इस इक्वेशन से निकाल के, भाई एट t इज इक्वल टू 0.0001 सेकेंड, देन t इज इक्वल टू 0.00002 सेकेंड। करंट की हम्म। वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इतनी सारी, उनका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, उन सबको ऐड भी करना पड़ेगा 1,000 बार। ये हाँ। सारे करंट कहाँ से आएंगे? इधर से ही तो आएंगे। हम्म। फिर उनको ऐड करो 1,000 बार, फिर उसको डिवाइड करो ओवरऑल टाइम से। चलो ऐसा। ये तो कट जाएगा, चलो जब हम dt को ऐड करेंगे, बट दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ हाँ, एक्सरसाइज। बहुत डिफिकल्ट है। हाउ मेनी टाइम्स विल यू ऐड आई स्क्वायर? सो इंस्टेड यू से हम्म। ओके आई एम गोइंग टू टेक द, मुझे फाइनली तो एरिया ही चाहिए ना ये वाला। हम्म। ये छोटे छोटे ट्राइंगल भी तो एरियाज ही हैं, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इज एरिया अंडर द कर्व, सो यू कैलकुलेटिंग करेक्ट। द स्मॉल एरियाज। हम्म। ठीक है। गॉट इट? यस सर। So RMS is a very important concept to understand because it has a physical significance. There is no real world significance of full cycle average which is zero. It is highly misleading. हम्म। फुल साइकिल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोई कुछ भी नहीं हुआ जी, हुआ बिल्कुल हुआ, गर्म हुआ है, हाँ। बट आप बोल रहे हो कि एवरेज इज जीरो इन अ फुल साइनसॉइडल वेव, एवरेज इज जीरो, तो हीटिंग तो नहीं होनी चाहिए फिर, बट हीटिंग हो रही है, इसलिए हम्म। हाफ साइकिल्स एंड फुल साइकिल्स आर वेरी यूजलेस, मैथमेटिकली दे आर ओनली यूजफुल। हाँ। ठीक है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कीप डूइंग दिस, कीप कमिंग बैक विद डाउट्स, इट्स फाइन। ठीक है सर। ओके। ठीक है, यू डू गेट स्टक व्हेन यू डू सेल्फ स्टडी। हम्म। ओके, यू फील ओके, खुद करने में थोड़ी सी वही ओवरकम करना है बैरियर। Once you become हाँ। independent minded and start studying on your own, then you are not totally dependent on a class. Then you say, okay, I will study and go back and ask doubts also. ठीक है। Okay, so let me just phasor. Let me tell you the new concept of a phasor. Very हम्म। useful, used in simple harmonic motion in class 11th, but वहाँ पे वो terms अलग होती हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे वही चीज जो है, and phasor diagram. So, so this is a uh, phasor is a rotating vector. Okay, हम्म। rotating vector, and what is it used for? It is only used for representing the sinusoidal AC voltage and sinusoidal uh, current. करेक्ट है। That's all. So ये जो, हम्म। instead of redrawing this, what you draw like this, and then हम्म। you write I is equal to I naught sine omega t, and E is equal to E naught sine omega t. ओमेगा टी। Sinusoidal alternating currents. There is another graphical method to represent them. अभी बार बार draw करना, it's very difficult to redraw this. हम्म। So instead of banking and depending only on these vectors, sorry, on this graphs, there is another nice way to represent them, and that is through the use of a rotating vector called as the phasor. So we will, let me tell you what it means. So what you do, you take x and y, first draw the normal, very similar to something similar to a complex number, but not exactly that. Later ban jayega. So let me draw the circle. So this is my circle. Okay, हम्म। that's my circle. And okay, so this is center. As usual, दो फिगर को ओवरलैप करो और वो तंग करना शुरू, सेंटर में नहीं आएगा, एनीवे जो आ गया चलन दो। कोई नहीं, ठीक है। व्हाट डू यू डू? स्टाइल वो भी साइज मारना का है फिर। फर्क आ जाता है। हाँ, हाँ।
अब चलो कोई नहीं, स्टाइल के पैसे देने पड़ते हैं तो स्टाइल के पैसे। एनीवे, यस सर। अब क्या करेंगे? जो करंट आपने, यू यू हैव अ करंट लाइक दिस व्हिच इज sinusoidal. Now you want this to be represented through a vector which rotates. So what you do is you say, okay, it's so let me show you. So let me draw this vector, for example. This is my vector, right? हो गया सर। So you can see something in red. हाँ दिख रहा है। ठीक है? So that vector is the current vector which I have shown you. ठीक है? इसकी लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, मतलब मैंने रेडियस कैसे डिसाइड करा इसका? हाउ डू आई डिसाइड रेडियस? I could have drawn a bigger circle, a smaller circle. Why I drew it? Thus, the amplitude, which is the I peak, हम्म। 5 amperes, जो भी दिया हुआ है, has हाँ। been taken as the radius of the circle. अच्छा। So if I have to draw another current, which is of 7 amperes, okay? So I have to तो draw बड़ा a bigger सर्कल। circle. Got it? Okay. यस सर। Now you say, sir, ये आपने rotating vector कर दिया, क्यों करा? इस what do you mean by a rotating vector का क्या मतलब होता है? And then you have made it at a certain angle. Why? What is the significance of this angle? है ना? You can, why you did not draw it down? अब ये rotating है mind you. So एक instantaneous position है इसकी, और जो ये इसका जो angle होता है, जो मैंने आपको बताया था, this angle, right? हम्म। This angle is changing anyway till 360 degrees. So one cycle is 360 degree, and therefore this started, for example, from here, will rotate and finally come back here. कभी यहाँ आएगा. Sometimes it will reach here. So at this position, if it started from here, it is at 90 degree, right? So यस सर। omega t is 90 degrees. ओके। So it started from here. So maybe here. Maybe, wait. खराब हो गया। Hmm. You don't have a choice but to give up. You can't win यस। against Mr. Zoom. यस उसने सर। डिसाइड कर लिया मैं तंग करूंगा तो करूंगा मैं. ऑडियो वेट, वेट फॉर इट अपने टू हिसाब से डिसअपीयर. ड्राइंग बना रहा हाँ, एआई का टेस्ट चल रहा है इनका कोई. है। ओके, लेट मी जस्ट रीडू दिस. ओके, ओके। नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं. ओके, ओके. So maybe it started and it has covered 90 degrees now. It started here, हम्म। so it is going like this. ये बढ़ रहा है एंगल. हाँ। ये मान लो तो ये एंगल बढ़ रहा है और ये एक किसी पोजीशन पे आ गया ये. So this appears like 45 degrees if you notice. हाँ। यस सर। है ना? मैं अगर यहाँ 45 डिग्री दिखाना चाहूँ तो मेरा 90 यहाँ पे है. This is my 45 degree. So my value at 45 degree is this much. ठीक है? My ठीक है। value here is 45 degrees. So if I draw perpendicular from here, the projection means the component of the amplitude, which is a vector in the red. This particular projection tells me the instantaneous value drawn from here. अच्छा। देखो ये मैं इक्वेशन किस चीज की लिखी है मैंने? Instantaneous. इंस्टेंटेनियस। So my phasor diagram should also give me instantaneous value at that angle. हाँ। Whereas what it shows you is just a red colored uh, arrow. That red color arrow, right, is representing peak value, full, right? लेकिन हाँ। at 45 degree, the if you see the instantaneous value, it is not full value. It is I naught by root 2 because sine of 45 डालना पड़ेगा मुझे. Sine हम्म। 45 is 1 by root 2.
So Yes, if I sir. put value of 45 degrees here, at 45 degrees, it is going to give me I naught by root 2. Root 2. Got it? Yes, sir. Wait. Let me just close it. Okay. आई थिंक इनका सर्वर गर्म हो गया मुझे लगता है यही बोल सकते हैं और तो मैं आई डोंट नो व्हाट टू से मेरा तो चल रहा लैपटॉप है। लैपटॉप तो गर्म हो जाते हैं बट यू माइट मेरा हैव तो सही चल एक्सेस रहा था वैसे। यू माइट हैव एक्सेस न्यूजीलैंड डेटा सेंटर ठंडी कंट्री है मैं शायद Yes, sir. इथोपिया वाले डेटा सेंटर से जुड़ गया हार गए तो इसलिए थोड़ा सा। जर्क आ रहे हैं मेरे सो मतलब पता है ना ये क्लाउड में ऐसा ही होता हाँ, यस सर। हाँ। है क्लाउड मीन्स दिस ओनली that हाँ। I can get connected to some other place you can get हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं। इंस्टेंस अलग हो जाते हैं वो हम्म। कंप्यूटिंग पावर है बस करेक्ट। okay holy shit so if you understand phasor and in these values and all I think easy हो जाएगा बहुत हम्म। अब खुल जाएगा ठीक है so हम्म। I'm drawing the phasor diagram of the current the purpose of phasor diagram is same to show you the instantaneous value only purpose नहीं है कोई different purpose is same what is यस सर। exhibited by a sine curve we are doing the same exercise but now we are using a slightly engineering oriented exercise because this is very what should I say trigonometry type of work 10th क्लास में जैसे साइन के ग्राफ सीखते हैं हम तो वो हाँ। नहीं करना होता इंजीनियरिंग ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है फिजर इसमें द ऑल्टरनेटिंग करंट्स आर नॉट यू कैन डू दिस अलाउड है बट वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड इज टू यूज फिजर टू रिप्रेजेंट एन एसी वोल्टेज और एसी करंट सो व्हाट आई टोल्ड यू एट point number for example m om so you are at om हम्म। okay now om is the peak value which is of I naught but the at 45 degree the value should be I naught by root 2 where do I show हाँ। phasor to radius of the phasor is fixed because the circle is of fixed radius so we are saying that the circle is of fixed radius fine but the magnitude of the phasor at different places different so the this projection okay on the y-axis this one okay if you notice this is your I peak and if from your knowledge of vectors perpendicular कितना लंबा होगा won't it be I naught sine of 45 हाँ, यस सर। आ गया ना instantaneous हम्म। value so what we do in the concept of phasor is we draw the phasor of the current this is the phasor okay ओके। wait so this is my phasor and the so this is not the instantaneous value phasor just tells you कि इस दायरे के अंदर भी यार पीक वैल्यू के बाहर नहीं जा रहे हम ओके एंड बट हाँ। somebody says okay tell me what is the now your angle remember phasor is moving always in an anti-clockwise direction so omega is like this okay so that is why हाँ। I have moved the first phasor which you saw was also in this direction हम्म। start point is here so you are moving 45 degrees start point is not this start point is this एंटी क्लॉकवाइज जाना है फेजर बनाने के लिए सबसे पहले पीक वैल्यू लेके ड्रॉ सर्कल दैट्स ऑल तो पीक ओके। वैल्यू 5 एम्पियर्स का मतलब से लेट्स से 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन द वर्ल्ड ऑफ डिस्टेंस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर राइट सो 1 हाँ। एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सो 5 एम्पियर्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मैंने कंपसली 5 सेंटीमीटर बना दिया
circle. यहाँ compass रख के I drew that. Now I turn around and I take a D and I move by an angle of 130. Say this is 180 degree. यहाँ हाँ. तक this much is 180 and this is 45. This is also 45. So I moved to 225 degree. Now you will say, sir, the I is given by I naught sine omega t. So I naught sine of 225 should be my value, instantaneous value. Where do I show it on the graph? So my answer to you is very simple. Just draw a perpendicular like this. Okay. This value on the y-axis is going to tell you the instantaneous value. Okay. So ये I naught, and you can see it is negative. It is downward. Sine of 180 plus 45. Third quadrant, minus I naught sine of 45 is equal to minus I naught by root 2. So this was I naught by plus, and this is minus I naught by root 2. So isko, how do we express it when we study? We say the projection of the rotating vector on the y-axis, the projection or the component of the phasor. Phasor is this, which is rotating, the red colored thing. तो वो रोटेट होके देखो तो टाइम, मतलब टाइम बदल गया, मतलब ये जो साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी बदल गया, टाइम बदल गया, तो फेजर टाइम के साथ रोटेट कर रहा है। पूरा चक्कर लगाने में फेजर को, तो देखो आपके जो साइन वाली ग्राफ थी उसके अंदर, इफ यू रिमेंबर, आई नॉट वाज देयर, साइन ओमेगा टी वाज देयर, आई वाज देयर. So when you shift the phasor from the world of sine graph to the phasor world, okay, the instant phasor, you still need an omega because quantity to वही है, but you're just representing the quantity in a different manner. And you know there is a frequency of the signal, generally 50 आती है इंडिया में, 50 cycle per second or 50 hertz. So I will say this phasor of, which is red color phasor representing the current, rotates 50 times in 1 second. Okay. This rotates 50 times in 1 second. So its frequency is 50. So 1-to-1 correspondence ये बन गई कि साइन में भी फ्रीक्वेंसी 50 थी, यहाँ भी 50 को एक्सप्लेन कर दिया. दूसरा हमें समझाना है कि देयर इज अ पीक. वेयर इज योर पीक इन दिस फेजर डायग्राम? सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आई नॉट इज द पीक. Next question will be, if I know the peak, I know the omega, then I want to find out the instantaneous value at what time period or what omega t angle. What is the value of the current? So I say, okay, the y component of the peak, which is this, for example, okay, जैसे हमने ये draw करा ये वाला, right? Tells me the instantaneous value. Okay. So if I, for example, the phasor rotates and the phasor reaches here. Okay, so phasor, for example, let's say the phasor reaches a value. phasor घूम के यहाँ आ गया. ठीक है? ठीक है. Let me just do this. ये सीधा नहीं बन रहा, बट assume it चिपक रहा है उसके साथ बिल्कुल. वो नहीं करने दे रहा उसको सेम y axis के ऊपर. Okay, so let's say this is on y axis now. Now if it is on y axis, then it is at 90 degree from the starting position. x से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, ये रहा फेजर वो वाला, ये घूम के पूरा का पूरा यहाँ आ गया, ये रहा करंट पोजीशन. तो 90 डिग्री रोटेट कर गया. At 90 degree in the world of sine, this was I naught sine 90 is equal to I naught. पूरी पीक वैल्यू. और क्या ये पूरी पीक वैल्यू आ रही है? आ रही है. आ रही है. मैंने पूरा का पूरा एरो ऊपर बना दिया. अब मेरा ये वाला छोटा हिस्सा नहीं है, इतना सा. जब इतना सा था मेरा ये पॉइंट ए और बी के बीच में, तो मैं आई वाज रिप्रेजेंटिंग दिस.
यस सर। तो उस समय तो इट वाज आई नॉट बाय रूट टू, बट जब ऊपर से नीचे बना तो दिस इज आई नॉट। ठीक है। तो इट इज मैचिंग। सो आपको पता होना चाहिए, मैंने रिप्रेजेंट अ फेजर, where are the different quantities which were there in the world of sine graph? There they were being represented with the help of a sine graph. Here they are being represented by the frequency of revolution of the phasor. Here they are हाँ, being represented by the y component or being projected of the phasor on the y-axis. That so I peak is being represented by the radius of the circle. सर्कल। सब कुछ वही है, सिर्फ सर्कल के अंदर एक रोटेटिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी प्रोजेक्शन ले रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो ठीक है। लेट्स look at another example. So let's say I'm given a situation like this. This is I'm drawing a phasor diagram for some instantaneous equation given to me, and I'm told please represent this in the form of a phasor. And that's okay, no worries. So what you get here is this. So I, so E, okay, EMF is given by E naught, the peak value, sine of omega t. And this is, for example, 314, because 314 divided by root 2 RMS जो है 220 आती है, तो इंडिया वाली ली है मैंने. ठीक है। And this is, I say, okay, represent this by the phasor. So I said, no worries, sine ही है तो कोई चिंता की बात ही नहीं. So I know the radius is going to be 314 volts. हम्म। So I said, okay, no worries. So let 3.14 centimeter be equal to 314 volts. So every 1 centimeter will represent 100 volts. 1 centimeter is equal to 100 volts. हाँ। तो ऐसे ओके, फुट्टा लिया मैंने, तो मैंने एक बनाया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 और 3.1 पे मैंने कंपस रखी, यहाँ सेंटर रखा कंपस का, कंपस यहाँ रखी, और मैंने उठा के एक 3.14 सेंटीमीटर का आई हैव ड्रॉन अ सर्कल. हम्म। ठीक है, ठीक है। बन गया जी मेरा ये आई पीक, सॉरी ई पीक यूज कर लिया मैंने. सो एवरी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 volts. Now हाँ। I say, okay, so tell me the value, and omega is also given to me, some omega 60, 50, India की 50 है. So let's say ठीक है। the frequency is given to be 50 cycle per second, which is Indian 50 hertz, one and the same thing frequency. So I know. हम्म। So please represent this phasor at any instant. At any instant. So I said, okay, at any instant, so take this. This is any instant. And this is it, okay, at any instant. हाँ। And now when you do it at any instant, uh, but this is not the instantaneous value, ये तो पूरा radius है, which is E naught peak, हम्म। right? ये तो E naught है. यस मैंने सर। तो आपसे at any time t पूछा था. हम्म। So you will say, okay, let's do one thing. Let's draw projection of this vector, this component on the y-axis. So I'm just projecting it and say this is my perpendicular line. This is my y-axis, right? So this हाँ। is my that instantaneous value. So E t is equal to E naught sine omega t. ये है तो सही perpendicular component. If हम्म। this is your after time t, this vector has rotated by an angle of omega t. Omega तो fixed है. T हम्म। टाइम बीत गया है, तो थीटा इस समय ये आ गया. हाँ। तो मैंने अंदर ये थीटा की वैल्यू डाल ली यहाँ पे.
ठीक है. You can see that perpendicular component, which is this. This is my perpendicular component. Actually represents calculation से भी E naught sin omega t. So this is a phasor diagram of the instantaneous value of E at any time t. और मैंने ये I have chosen it very intelligently because I said okay, I know the frequency, so the angle is going to be omega multiplied by t. बता दो. So you said t is 1 by 300. I said no problem. So I'm going to put 1 by 300 here. Tell me your frequency. Said my frequency is 2 pi multiplied by 50. Said okay, no worries. So this is 50. This is pi by 3 then. हाँ. So मैंने ये pi by 3 ले लिया. मैंने pi by 3 बनाया ये. I took a D and I made a pi by 3 angle of 60 degree, and I drew the phasor, which is E naught phasor. So E naught at 60 degree has a vertical component of E naught sin omega t. हाँ. कर लिया represent answer. ठीक Sinusoidal है. graph की जगह I used a phasor to represent Yes, the instantaneous value. Instantaneous value is coming from the projection. The radius is I peak or E peak. How do you calculate omega t? कितने एंगल पे बनाना है? Tell me the time. Tell me the instant. Tell me the omega. I will multiply. Tell you. You tell me omega is, time is, frequency is still, omega is still 100 pi, but time now is 1 by 150. So I will say, okay, then if it is 1 by 150, then 100 pi into 1 by 150. So 2/3 of a pi. Yes. So 2/3 of a pi is 120 degrees. Hmm. So 120 डिग्री है अगर, तो वो साइन ऑफ 120 डिग्री हो गया. 90 प्लस वो उस साइड चला जाएगा. 90 को क्रॉस करता हुआ थोड़ा सा इधर चला जाएगा, राइट. उसका वाई कॉम्पोनेंट ले लो, दो हिस्सों में बना लो उसका. एक वाई कॉम्पोनेंट जो यूं सीधा बनाओगे, एक्स पे मारोगे, वही पैरेलल होगा वाई के. यस सर. एक ही बात है ना, या तो वाई पे सीधा दिखा दो या वाई कॉम्पोनेंट ही दिखा दो. हाउ डज इट मैटर? सो यू हैव दिस, you can draw this, and then you can draw, I'm sorry, you can draw this. ये आ गया ना 90 डिग्री. Some people say projection नहीं है. लो प्रोजेक्ट, खुश रहो. Take this. I will draw a line on the y axis from here, and ले लो फिर प्रोजेक्शन ले लो. एक ही तो बात है. तो अब जो ये y axis बना, ये दोनों बराबर नहीं है, सेम ही तो है. Yes sir. So it's a phase. So moving forward, when we study this chapter, we will start representing the values of the I and E using phasor. और phasor को लिखने का भी एक मेथड होता है. I will just let you know. But before that, for example, you write a phasor of some voltage. There is a way to write that. I will just tell you that. Wait for it. यहाँ कोई डाउट? So far, any doubt in your mind कि हम क्या कर रहे हैं आखिर? With the help of phasor, we are using a rotating vector to represent everything same. Current doesn't change. The current still remains the same. So there is no change there. Just a rotating vector has come into picture with omega t, with frequency, everything is same. ठीक है सर. ठीक है, let me just close it यार, ये तंग कर रहा है बहुत. हाँ, ये थोड़ा सा. Oh, basically I've opened many whiteboards. तो बस बिजनेसमैन ने वहां पे लगा दिया अपना सॉफ्टवेयर. करो तंग इन्हें. Yes sir. Yes, I think we've written. Let me go to the next page. Okay. Okay, now I will introduce you some new terms. And because these are very fundamental basics, so get a grip on them. Okay, so in alternating current, there is a concept of
which will you will learn later, but I am introducing use. अभी use नहीं होगा उसका, but soon Okay. there will be use of this. So let me just introduce you to a situation, and so that your so let's say this is your phasor plane. A plane used to represent a phasor. That's all. X and Y नहीं use कर रहा मैं, but this is my phasor plane, and this is my okay axis. ठीक है, तो now what I'm going to do is I'm going to represent एक सिग्नल था और कोई एलिमेंट था. ओके, वो एलिमेंट का मेरा मतलब है या तो वो रेजिस्टेंस हो सकता है, या इंडक्टर होता है, या कैपेसिटर होता है जब एसी हम्म, करंट पढ़ेंगे. क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे मोटर होती है ना, मोटर हाँ. इज हाईली इंडक्टिव. उसके अंदर बड़ी कॉइल्स होती हैं ऐसी टर्न वाली, इंडक्टर वाली. Yes, sir. और बहुत पंखा वगैरह जो होता है इसमें भी वाइंडिंग तो होती है, लेकिन कैपेसिटर भी होता है. सो ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, एंड जनरली जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनमें रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है. हाँ. कैलकुलेशन के मेथड से उनको तय करा जाता है कितना रखना है हमें, राइट. बट अभी हम वो उतने लेवल पे नहीं जा रहे, हम कुछ करने की कोशिश करेंगे. सो आई विल शो यू अ सिचुएशन, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू रीड इट, रीड कैसे करना है उसको. ठीक है, हम्म, वेरी बेसिक. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फेजर ऑफ अ करंट. दैट्स माय फेजर. ठीक है. ओके. ठीक है. Okay, let me just enlarge it so that it is visible to me. So this is one of my phasor. हम्म, Then I'm going to draw another phasor, which is this. Okay. Now, if you notice, let me just name them also and write them. So phasor number 1 is your current, and the phasor number 2 is voltage. And this is your alternating current signal, which you've applied across some load. Now, the load is something that requires current to run, okay, and voltage. It can be a resistor, it can be inductor or capacitor. ये एक स्पेसिफिक टाइप का लोड है, हमें पता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है जब जब दूसरे टाइप के लोड्स आ जाते हैं. नाउ दिस इज वन फिगर. हाँ. Okay, now before I get into the second, in the case of resistors, when we draw both the voltage and current, the way to represent is to use two circles, and depending on 1 centimeter equal to what, use the arrows. So let me say the current, मैंने resistor लगा रखा है. First thing I'm doing is I'm bringing the current and voltage in the same line. ठीक है, ये दोनों देखो सेम लाइन में आ गए. हाँ. So there is a reason for that. The reason is, see, in the case of a resistive load, जो resistor होता है ना, हम्म, तो आपने लिखा भाई my voltage is equal to 314 sin omega t. Good. And my resistance is equal to 31.4 ohms. So I asked you, what is your instantaneous current? You said my instantaneous current I is equal to V by R is हम्म, equal to 314 sin omega t upon 31.4 is equal to 10 sin omega t I. हाँ. राइट. फिर मैंने इसमें ले लिया कि भाई लेट नो 50 वोल्ट्स भी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वोल्टेज का 6 सेंटीमीटर के आ गया करीब. और इसमें मैंने हाँ. ले लिया लेट 5 एम्पियर्स भी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसके 2 सेंटीमीटर की लाइन बन गई. तो हम्म, इसलिए मैंने करंट की छोटी दिखाई है और वोल्टेज की बड़ी है, yes, क्योंकि sir. फाइनली तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई ना. तो हाँ. चॉइस है आपकी, कुछ भी कर लो. तो लेकिन एक ही डायरेक्शन, दोनों बिल्कुल साथ साथ चलेंगे. तो जैसे जैसे अगर आप नोट करो, मेरी जो करंट की इक्वेशन है और जो वोल्टेज है, दोनों में साइन ओमेगा टी है, राइट. तो हम्म, किसी भी टी पे एंगल दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ओमेगा टी सेम है. yes, sir. टाइम जितना बीतेगा तो आगे भी बढ़ेंगे. तो लेट्स मी पिक दिस, यदि आगे बढ़ेगा हम्म, 90 डिग्री पे आ गया, जितना भी टाइम हुआ, डिपेंडिंग ऑन क्या फ्रीक्वेंसी थी, निकाल लिया. तो वो उसके लिए भी तो एप्लीकेबल है.
यस सर। करंट के लिए जो छोटे वाला भाई है इसका, ये भी घूम के यही है। तो इन द केस ऑफ resistors, the voltage phasor, okay, so this is your voltage phasor. The voltage phasor is moving and the current phasor, oh, एक second, so this phasor, वो उसके साथ क्यों चिपक गया, anyway, या वो भी देखो इकट्ठा आ गया. So both यस सर। actually rotate simultaneously. इसकी, ये रजिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। क्योंकि रजिस्टर के अंदर यहाँ फर्क नहीं आता, साइन ओमेगा टी के अंदर कोई फर्क नहीं आता. नहीं आता सर। ये दोनों जो हैं, ये वाले, द द ones which are omega t for both is constant, same, they will rotate like this together. तो हम बोलते हैं कि there is no phase difference between them. What? No phase difference situation. डिफरेंस These two सिचुएशन। phasors move together. The word used is there is no phase difference between them, between E हाँ। instantaneous and I instantaneous. ठीक है? क्यों? इनकी ठीक है। प्रोजेक्शन भी वैसे ही मूव करेगी. अगर इन दोनों में कोई गैप नहीं है एंगल का, तो नहीं हम्म। होगा. ठीक है? अब मैं, लेट मी ड्रॉ नहीं। सिचुएशन विच इज, so you noted this, that they move together, omega t is same always for them. यस सर। Now what I do, I bring some other element, maybe inductor or current, don't worry, sorry, inductor or capacitor. In the case of inductor and capacitor, the situation will look slightly different. Okay, let me tell you why. But don't worry, अभी हम कौन सा ले रहे हैं? It is either inductor or capacitor. You have to focus on something else. You have to see the difference in the behavior of voltage and current from phase, how the phases look like. So I will draw this. Okay, so let me redraw this. And this is my basic, and this is my very basic. ठीक है? And this is my, this is again my current phasor, but let me draw the phasor of voltage. Generally मैं voltage phasor बड़ा ही दिखाता हूँ, generally. Not, कोई जरूरी नहीं है कि दिखाना जरूरी, not, you don't have to. Now I'm going to draw the voltage phasor, but you see voltage phasor is ahead of current. They started from a point which is x-axis, but always, even if you start from x-axis, the voltage phasor is ahead of current phasor by a gap of 5 degrees, for example. Okay. So there is a gap between them, and I say the I, if I say I is, I have to write. So let me just write V first. Okay, so V at any instant is given by V naught sine omega t, because it has covered omega t. So if it has covered omega t, so omega t. Okay. Okay. Now somebody said, okay, now they are not moving together as was the case with resistor. Now you're using some other element, maybe capacitor or something. Now, how will you represent the value of I? That the time elapsed is same for both, but I, t तो उतना ही बीतेगा ना घड़ी में हाँ। दोनों के लिए. बट हाउ डू यू रिप्रेजेंट द, आई सेड ओके, इसकी पीक वैल्यू जो रेडियस की है आई नॉट है, करंट के जो वो उसका एरो है उसकी लंबाई आई नॉट है. बट इसका मैं अगर लिखना चाहूँ, आई विल हैव टू राइट इट लाइक this. Can you see the angle by which it has moved? If this is omega t, then I's angle, the angle हाँ। of I, which is this, is going to be how much? Because phi is the extra angle which voltage has over and above what अच्छा अच्छा दिख रहा है समझ ऊपर. गया। वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है, तो आई का थोड़ा कम है, स्लाइटली लेस. आई हैव सब्ट्रैक्टेड. ठीक है। So in
engineering or in physics, we will say voltage leads current by pi radians. दोनों इकट्ठे नहीं चलते ये. They don't move Okay. together. They always maintain a gap. So let me pick up V. V जैसे घूम के यहाँ आ गया. तो what will happen to current? Current भी घूम के उस टाइम में यहाँ आ जाएगा. Such that the gap between them is always phi. Okay. Always phi. This is the way it runs. So they will move together, but they will move like this with a gap. Okay. Right? एक सिचुएशन ये है. Don't worry whether ये इंडक्टर में होता है या कंडक्ट उसमें होता है कैपेसिटर में. What you noticed is very different from the behavior of the resistor. Your resistor behavior is अच्छा दोनों इकट्ठे चलते हैं, they're in phase. But in the case of this element, you don't know which one is it. There is something called as a phase difference. They have a phase difference. This angle difference of phi is called as the phase difference. Phase difference. They are not in phase. If they are in phase, they will move together like this. Same. दोनों वेक्टर चुपके हुए ऐसे. हाँ एक छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एंगल वाइज दोनों सेम है. बट अगर दोनों में गैप है और वो गैप आप गोल घूम रहे हो और वो गैप मेंटेन्ड है, then they have a phase difference. They are not in phase. They are having a phase difference. ठीक है. Got it? Yes sir. लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, फेज डिफरेंस वगैरह. ये क्यों होता है वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, रीजनिंग में नहीं जा रहे हैं हम, सिर्फ फेजर डायग्राम के अंदर सिचुएशंस देख रहे हैं. ठीक है. Okay, so somebody said, okay, can there be a situation where the current, okay, so let me just, okay, so phase difference के अलावा the English you need to understand. So in this case, voltage is ahead of current. So look at the language used. Voltage leads. Yes sir. आगे है. दूसरा कोई बंदा आके बोल सकता है करंट लैग्स, पीछे रह गया करंट. चॉइस है आपकी, क्या बोलना चाहते हो. हु लैग्स, हु लीड्स, इट्स योर चॉइस. बट दे विल एग्जैक्टली टेल यू द नेचर ऑफ द एलिमेंट कि कैपेसिटर है क्या क्या. इससे से पता चलता है कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है. तो जैसे ही आप अलग अलग टाइप के लोड लगाओगे, यू विल सी दिस बिहेवियर कि जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं V इज इक्वल टू आई आर, वो लगना बंद हो जाएंगे. क्योंकि आई आर में तो सीधा सीधा दोनों साइन ओमेगा टी हो जाते हैं. नॉट इन द केस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इट विल चेंज. ये एंगल इंट्रोड्यूस हो जाएगा अचानक ही. लुक एट द लैंग्वेज विच इज लैग, द अदर लैंग्वेज इज लीड. Voltage leads is same as saying current lags. And if there is a lag and a lead, there is a phase difference. In the case of resistor, is there a lag? In case of a resistor, in this diagram, do you have a lag between V and I, phasor vectors? No. नहीं है. Is there a leader? Somebody is leading? No. नहीं. There is neither lag nor lead in this situation. So no phase difference. No phase difference. But it is there. The words lag and lead come when there is a phase difference. Yes. Who leads and what? We will study in detail. Don't worry. So I'm giving you a question now. Let's see. It's a quiz. It's not a question. It's a small quiz to revisit this concept. Okay? Okay. So let's say we have a situation like this. And you have a phasor diagram which you see. So now you know it is the same signal, and the signal, it can be represented with the help of I and V both. It is alternating. It follows sine graph. It does. दोनों sine graph है.
क्योंकि ये देखो सब। साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आफ्टर ऑल इज ऑल्सो साइन। हाँ। साइनसॉइडल का कोई लॉस नहीं हुआ, दोनों की हम्म, फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है। हाँ। देयर इज नो लॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो कि सर एंगल आ गया तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदल गई, नहीं। नहीं दोनों नहीं। एक सेकंड में 50 बारी घूमेंगे। नो नो, दैट इज नॉट अवर वरी, ठीक है। सेम रहेगा। ठीक है, सो नो लेट मी ड्रॉ द situation. So let me say this is a situation of one E vector, क्योंकि जनरली आई रिप्रेजेंट वोल्ट, जनरली मैं छोटा भी बना सकता हूँ, मेरी चॉइस है वो, हम्म। लेकिन मैं बनाता जनरली इसको ऐसे। तो मेरा ये एक सिचुएशन है, ये वाला। एंड लेट मी जस्ट शो इट विथ सम डिफरेंट कलर। ओके, नाउ I will label them. So you will now recognize the label, that what is the label. So this is ओके। एक छोटा है तो दोनों एक ही सर्कल पे बना दिए, तो फर्स्ट गलती। जब दो अलग फेजर्स हैं, हाउ कैन दे हैव द सेम रेडियस, राइट? हो हाँ, सकते हैं, अलग रेडियस होना चाहिए। पहले मैंने अलग, हो सकते हैं हम दोनों एक ही जैसे ले लें, दोनों ही 300 एम्पियर और 300 हाँ, वोल्ट है। वो हो सकता। तो हाँ। 100 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 वोल्ट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। बना दो एक दूसरे के ऊपर, तो हाँ। कंफ्यूजन पैदा करेगा, दिखेगा नहीं ठीक से। तो बेटर यस। है कि स्केल अलग लेके बना दो। तो ओके, नाउ दिस इज वी पीक, द होल एरो इज वी पीक। Okay, so the one phasor is first phasor is voltage. Okay, ओके। the second is this, and I will draw some values. Sorry, let me draw. Okay, I so this is omega t. मैं exactly बना देता हूँ. This is phi. Okay. My ओके। first question to you is between I and between I and V, who is leading? डी। यहां से स्टार्ट हुए थे आप, आई आगे अच्छा, है, ओ आई आई, हाँ। यस। एंटी क्लॉकवाइज जाना है। वो मैंने नेमिंग गलत आंसर इज देख ली आई। थी बस। हाँ ठीक हाँ। है, आई राइट। हम्म। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी यस सर। एंड वी? सो ओके, वेट, मैं लेट मी जस्ट, आई थिंक यू वर नॉट, लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ। और मेरा इंटरकनेक्शन, इंटरनेट स्लो हो गया। मेरा है, मैं आज हॉटस्पॉट पे ले रहा हूँ क्लास। अच्छा, ओके, wait, let me just rub this off. I think it, this is mhm. We were on page number 2, right? 3। 3. Okay, ठीक है. So I'm here. Okay, so let me just rub portion of this. I think this was the source of confusion. ये let's remove it actually. ये वाला जो part है. यार मुझे इसका ना मतलब what should I say? Okay, better ये है कि इसको delete कर देते हैं. Okay.
Okay. So V is this, sorry. Yes sir. V is this and current ही है पूरा. हाँ ठीक है. Okay. My second question is, what, as per this diagram, okay, write the equation of voltage, instantaneous value of voltage, as per this diagram, क्या होगी? V नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, लिख दो. I'm good. अच्छा. Fine है, ठीक है. So I'm writing it. हम्म. Please tell me what will be the equation of instantaneous current. इंस्टेंटेनियस की आई नॉट साइन ओमेगा Okay. टी माइनस थीटा. So you're saying कि कम होगा. Don't you see I आगे है? प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस प्लस. You mean phi और theta जो भी है. Extra है ना, लीड था भाई, हाँ. extra है उसके पास. यस सर. It's हाँ. ahead. Agreed? यस सर. So you got it right. Can I say voltage lags I by a phase difference of phi? True or false? ध्यान से पढ़ लो. लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना. हाँ यस सर. टेल मी. हाँ ट्रू है ये. ट्रू है. आया समझ में? हाँ यस सर. गुड. सो वी आर बिल्डिंग योर टर्मिनोलॉजी. ये वैसा चैप्टर नहीं है जैसे वो था पहले. टर्मिनोलॉजी नहीं आती आपको, तो अब खुले में यूज करेंगे. इंस्टेंटेनियस, आरएमएस, धीरे धीरे. टेक्स टाइम ठीक है. टू. वंस यू आर कॉन्फिडेंट, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर टू. These are the hard parts of the chapter. In fact, they are not hard, they're new. That's all. Any यस. new language, new terminology will bring stress, but we will reduce it drastically going slow on this. So once I'm confident that you have learned this, we will start getting into AC circuit with a resistor, AC circuit with an inductor, AC circuit with a capacitor, AC circuit with inductor and resistor, etc., etc. combinations. Do some transformer, some generator and all. Finish it off. Khatam. ठीक है. ठीक है सर. If you understand this, be very clear on definitions of integrals we are doing. ओके. Integral of, अच्छा IRMS का आज बहुत अच्छा सीखा है. RMS निकालना, स्क्वायर रूट कैसे लेना है, बाद में लेना है. पहले I स्क्वायर टी करना है, फिर डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ 0 to t dt करना, राइट? सो यस सर. रिवाइज some questions on calculating RMS values. ठीक है. दिख जाएंगे. एक क्वेश्चन भी काफी है. One question is also enough. यस From सर. any book, any MCQ, you will see first 2, 3, 4 will be calculate the RMS value of this. एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, because you know it's I square dt integral 0 to t divided by dt 0 to t, and then after calculating the square root answer. ओके.